StudyIQ IAS अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। Vivekanand said that world is like a gymnasium where the nation states come to exercise and flex their muscles. शायद ये चीज मोदी जयशंकर डॉक्ट्रिन के लिए सबसे सही बैठती है। Ever since the Modi government came in 2014, India has seen tectonic shifts in the way foreign policy has been conducted in India ever since. ये बात सबसे ज्यादा जाहिर होती है तब जब हम फॉरेन पॉलिसी को डिफाइन करते हैं। इफ यू डिफाइन फॉरेन पॉलिसी, इट वेरी सिंपली मीन्स सिक्योरिंग इंडियाज इंटरेस्ट एट होम एंड पर्टिकुलरली एट अब्रॉड, और साथ ही साथ कुछ ऐसे ग्लोबल कॉमन्स जिसके इंडिया भागीदार भी हैं, जैसे कि ग्लोबल एनवायरनमेंट, क्लाइमेट, ट्रेड, सिक्योरिटी इत्यादि। With the coming up of Modi government, there has been two major policy makers. दो लोग सबसे ज्यादा पॉलिसी को शेप करने में अपना योगदान दिया है, और वो हैं स्वयं प्रधानमंत्री मोदी और दूसरे बैठते हैं एस जयशंकर। हालांकि व्यूअर्स इस बात को जानते हैं और वो इसको पॉइंट भी कर सकते हैं that श्रीमती सुषमा स्वराज happened to be the first foreign minister under the Modi government. But since 2015 of January, S. Jaishankar has been the foreign secretary till 2018. So 2015 से 2018 तक बतौर विदेश सचिव और 2019 में आए मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में बतौर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपनी अमिट छाप छोड़ी है भारतीय विदेश नीति में। भारतीय विदेश नीति प्रधानमंत्री नेहरू के कार्यकाल से प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल तक काफी उतार चढ़ावों को देख चुकी है। It has seen the heady days of non-aligned movement. It has also seen many lows in 1962 Indo-China War. 1965 में हमने अपने प्रधानमंत्री को ताशकंद में खोया, जिनका नाम शास्त्री जी आप सब जानते हैं। And in 1998, India witnessed a nuclear cold shoulder. यानी कि हमने न्यूक्लियर डेटोनेशन किया, India came out in the open, but at the same point of time, it saw that the whole world had diplomatically shunned India. An interesting point to know was that France was the only country that happened to handhold India during those trying days. और अब जब इंडिया G20 की प्रेसिडेंसी को लीड कर रहा है और आने वाले सालों में आप देखेंगे प्रगति मैदान में कैसे एक से एक G20 के लीडर्स प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार के साथ शिरकत करते हैं। नाउ ये सारी चेंजेस सबसे पहले देखने को मिली 2015 में भारत पैलेस्तीन के बदलते रिश्ते और आयामों के लिए। हमने एक एग्जाम्पल पैलेस्तीन भारत संबंध से लिया है। 2015 में पैलेस्तीन ने यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन में इजराइल के खिलाफ चल रहे ऑपरेशन प्रोटेक्टिव एज के तहत वोटिंग करवाई थी। इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम from the times of Mahatma Gandhi itself tried to vote against the favor of Palestine. महात्मा गांधी कभी कहा करते थे that Palestine belongs to the Arabs as England belongs to the English and France belongs to the French. साथ ही साथ इंदिरा गांधी के समय में भी पैलेस्तीन के लीडर्स को भारत में आने का मौका दिया गया, उन्हें स्वागत और डिप्लोमेटिक एक्सेस भी दी गई। But the Modi government for the first time tried to abstain in the voting of UNHRC and made sure that it has its own strategic autonomy. It becomes more perplexing when in 2018, Prime Minister Modi became the first serving Prime Minister of India to ever visit Palestine. आप इसको क्या कहेंगे? These are two very different thoughts emerging from the same head. So, इसके केवल दो नाम हैं that I am quoting S. Jaishankar from his 4th Ramnath Goenka memorial lecture. And he said that India is now evolving its foreign policy based on two very important pillars. And what are those pillars? One is strategic autonomy, that means रणनीतिक स्वायत्ता, and the second is pragmatism, यानी कि यथार्थवाद। भारत के हर बायलैटरल रिश्ते में आपको ये यथार्थवाद और प्रैग्मेटिक ऑटोनॉमी
यानी कि स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी और प्रैग्मेटिज्म देखने को मिलेगा। ये चीज हम इंडिया यूएस रिलेशन से भी जोड़कर देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, when the Modi government came in 2014, there was a lot of skepticism within the Barack Obama administration. बराक ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन जिसने काफी क्लोजअप तरीके से, काफी नजदीकी तरीके से मनमोहन सरकार की इंडिया यूएस न्यूक्लियर कॉपरेशन डील में मदद की थी, वे मोदी सरकार से काफी दूरी बनाए रखे थे। मोदी took this challenge and invited Barack Obama for the 2017 Republic Day parade. This was also the second time that President was visiting India, and it showed a shift in the US policies towards India. ये कहा जाता है by most of the diplomats that it was that point of time that US dehyphenated India and Pakistan in South Asia. यानी कि साउथ एशिया में उन्होंने इंडिया और पाकिस्तान को देखने के लिए अलग अलग चश्मा पहनना शुरू कर दिया था। What followed later was a series of bilateral agreements between India and US. LEMOA, COMCASA, या Basic Exchange Cooperation Agreement called as BECA, they were all very close linked military ties between Indian and US militaries. Now this showed the way that India as well as US was redefining their partnership. Not to forget, US also under Obama made India as what you call as pivot to Asia. अगर बात करें इंडिया और रशिया के रिलेशंस की, डिप्लोमैट्स कॉल इट एज दोस्ती द्रुजबा रिलेशनशिप, यानी कि एक तरफ दोस्ती दूसरी तरफ द्रुजबा, विच इज द वर्ड ऑफ रशियन फॉर दोस्ती। नाउ अगर आप इसे देखें, इंडिया एंड रशिया गो बैक to those days when India had no friends, especially during the heady Cold War days. चाहे वो कुडानकुलम न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स हो या very recently Gaganyaan missions, Russia has always backed India with its technological supplies. Not only that, Russia, according to SIPRI report, has been the majority arms supporter, not less than even 65%. So from 1992 to 2019, Russia has been exporting arms, and our total arms import is around 65% for Russia. That speaks a lot. Not only this, India-Russia collaboration in many technological assets that we have, specifically military technological assets जो हमारे पास हैं, जैसे कि ब्रह्मोस या सुखोई, एक तरीके से इंडिया और रशिया की एक्सचेंज ऑफ टेक्नोलॉजिकल एग्रीमेंट्स या एक्सचेंज ऑफ टेक्नोलॉजिकल नॉलेज की सबसे उम्दा एग्जाम्पल्स हैं। नॉट टू फॉरगेट, द रिसेंटली कंक्लूडेड S-400 missiles was another example of India's strategic autonomy that it exercised vis-a-vis Russia and US. अब बात करते हैं भारत के पड़ोसी राज्यों की and the foreign policy related to the neighborhoods. मोदी गवर्नमेंट की सबसे पहले आने वाली पॉलिसी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के अंदर मोदी गवर्नमेंट हैड सब्स्टिट्यूटेड और रीक्राइसेंड द लुक ईस्ट पॉलिसी। लुक ईस्ट पॉलिसी जो शायद प्रधानमंत्री आई के गुजराल जी के कार्यकाल में शुरू हुई, एक तरीके की अपनी टूवर्ड्स ईस्टर्न एशिया देखने की नई सोच थी। ये देखा गया है दैट 49% of India's GDP had come through foreign merchandise trade. And this foreign merchandise trade largely went to East Asia through the Indian Ocean region. यानी कि आपके 49% of the GDP हमें इंडियन ओशन की ट्रेड्स के थ्रू मिल रही थी। ये बताना लाजमी नहीं है that how much important are the trade routes of Indian Ocean to us and their access towards East Asia. तो मोदी सरकार ने एक कवायद जो साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया में लॉन्च की, और वो है सार्क को रिप्लेस करना एंड टू रिप्लेस इट विथ बिम्स्टेक। नाउ साउथ एशियन रीजनल कॉर्पोरेशन, साउथ एसोसिएशन ऑफ साउथ एशियन रीजनल कॉर्पोरेशन इन विच पाकिस्तान वाज आल्सो अ मेंबर, वाज ट्राइंग टू डिस्टेबलाइज इट। पाकिस्तान का सार्क में होना शायद भारत के गले की हड्डी था। द मोदी गवर्नमेंट substituted it with the BIMSTEC. Now, BIMSTEC has the membership of countries like Thailand and Myanmar.
what you saw next was a series of regional cooperation agreements. For example, the Bangladesh, India, Nepal, Bhutan Movement of Motor Vehicles Agreements Act. So you can have a unified movement of motor vehicles across all of these nations. Not to forget the Kaladan Multimodal Project in Myanmar or the India-Myanmar-Thailand trilateral highways of 1340 kilometers long. And in 2017, even with the reservation of Pakistan, India launched the South Asian Communication Satellite, which gives varied services, बहुत सारी ऐसी services that caters to all of the South Asian regions. And last, but certainly not the least, was finding a separate way, an independent way to trade with Afghanistan. हम बात कर रहे हैं the Zaranj-Chabahar link towards India. Now, the Zaranj-Chabahar link towards India was using Afghanistan, then Iran, and then transporting the good directly from the Arabian Sea to the India's west coast. Now, this was done by Afghanistan themselves in 2019, and it showed the world that pragmatism can work really well. Now, while we are talking about East or ASEAN regions, I want to take a leaf out of the book of Jairam Ramesh as well as Subramaniam Jaishankar. Both of them had handled in some ways India's changing foreign policy. S. Jaishankar, while delivering the Ramnath Goenka lecture, memorial lecture, he said that why we withdrew from the RCEP. हम RCEP के बारे में बात कर रहे हैं, and I am quoting the Foreign Minister of India, Jairam Ramesh. He said that the Regional Comprehensive Economic Partnership, जो partnership 10 ASEAन और बाकी के 5 फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के मेंबर्स हैं, जिसमें इंडिया को भी आना था, हमने वहां से विड्रॉ क्यों किया और ये एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत कैसे आता है. एस जयशंकर सेड दैट नो एग्रीमेंट इज बेटर देन बैड एग्रीमेंट. उन्होंने ये कहा कि आरसीईपी हैड अ लॉट ऑफ कंपटीशन फॉर इटसेल्फ, और आरसीईपी में जाने का मतलब ये था कि हमारे इंडिजिनस इंडस्ट्रीज जो शायद उस लेवल की कंपटीशन के लिए परिपक्व नहीं थे, उन्हें इस भेड़ चाल में खदेड़ देना या उन्हें इस भेड़ चाल में झोंक देना. He said that India already has free trade agreement with 12 of the RCEP members. And you know how many are the RCEP members? 15. So out of 15, we have FTA agreements with 12 other members. And as the Indian government thought, it is not very wise to go with the RCEP. This he says, यानी कि ये जयराम रमेश कहते हैं, that this is not a political conservatism or this is not an economic autarky. ये उन दिनों भारत को उन दिनों में ले जाने की बात नहीं है जब महालनोबिस हुआ करते थे और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की बात होती थी ड्यूरिंग द फर्स्ट और सेकेंड ईयर्स प्लान्ड डेवलपमेंट. वो ये कह रहे हैं कि ये हमारी रणनीतिक स्वायत्ता है. हम जरूर एक्ट ईस्ट के तहत बिल्कुल जुझारू रूप से लगे हुए हैं, पर ये हमारे अपने निर्णय है कि हम कौन सी संधि में भाग लेंगे या नहीं लेंगे. Now this explains the way India's foreign policy is changing with a big bang approach. अब बात करते हैं दूसरे ग्लोबल इश्यूज की जो शायद भारतीय विदेश नीति को टेस्ट करती है. The time is to look at other global issues that kind of tests Indian diplomacy. What are those? Number one, क्या आप जानते हैं that there is no ideal definition of terrorism existing in the world. ना ही यूनाइटेड नेशंस में, ना ही दूसरे मल्टीलैटरल फोरम्स में, ना ही बड़े बड़े नेशंस के पास जैसे यूएस, चाइना, इंग्लैंड या इवन इंडिया, ये सारे देश एक डेफिनेशन ऑफ टेररिज्म को मानते ही नहीं है. इनफैक्ट इंडिया वांट्स टू हैव अ ड्राफ्ट कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म, एंड दिस ड्राफ्ट कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म इज गोइंग एट अ स्नेल्स पेस. यानी कि पूरे विश्व की देशों में ये आम राय है ही नहीं कि आतंकवाद की परिभाषा क्या होगी. भारतीय डिप्लोमेसी इसे परिभाषित करने में
पूरे जोर शोर से लगी हुई है। दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज भारतीय डिप्लोमेसी का है और शायद पूरे वर्ल्ड डिप्लोमेसी का, is to look at the way multilateral finance institutions are behaving. यानी कि वर्ल्ड बैंक, IMF, WTO, ये सारे मल्टीनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स जब ब्रिटेन वुड इंस्टीट्यूशंस के तहत आ रहे थे, लगभग पूरे देश या पूरे दुनिया के देशों में ये कवायद थी कि उनके तरफ से मिलने वाले पैसों पर उनका हक हो। बट अब with the coming up of banks like Asia Infrastructure Investment Bank or Asia Development Bank or a very newly created New Development Bank of BRICS, India and the other countries like China, Brazil, Russia are showing to the world that you don't need the help of Bretton Woods institution alone. Now this also is a strategic part of India's diplomacy. हम इसके बारे में और विस्तार से चर्चा कर सकते हैं जब हम अपनी इकोनॉमिक सीरीज लेकर आएंगे, बट टिल नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट नाउ इंडिया does not need the help of multilateral institutions like World Bank or IMF. It has created its own financial infrastructure at the international level, and the credit indeed goes to the Modi government for that. Coming to the last section and discussing India's soft power diplomacy. इंडिया की सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी के बारे में बात करना फॉरेन पॉलिसी के अंदर उतना ही जरूरी है जितना शायद आपके फॉरेन पॉलिसीज के मुख्य आयामों को डिस्कस करना है। एम्बेसडर विकास स्वरूप, who happens to have some kind of authority over soft power diplomacy, says that India has aced this game. इंडिया ने अपने 30 मिलियन स्ट्रॉन्ग डायस्पोरा को एक पहचान दी है जो भारत के बाहर रह रहे भारतीयों के लिए है। Now, within this soft power diplomacy, India has also given humanitarian assistance and disaster risk reduction assistance to countries like Yemen, Mozambique, Iraq, Sri Lanka, Nepal, Fiji, etc. Now, this speaks a lot, not just about India's larger role in the Indian Ocean region, but it also speaks about how India takes it as its own responsibility. ये चाइना के द्वारा किए गए बिग ब्रदर एटीट्यूड से या लोन वॉरियर या लोन वुल्फ डिप्लोमेसी से काफी अलग है। ये भारत को एक सॉफ्ट पावर पुश देता है। Not to forget, India under Modi also was able to make 21st June declare as International Day of Yoga. Now, yoga became a symbol of India's contribution to the world. Also, the International Solar Alliance and the recently concluded Coalition for Disaster Risk Reduction happens to be India's contribution in the field of renewable energy as well as disaster risk reduction. And this speaks a lot about how India conducts its soft powers. Now, going forward, and I will take again the help of our External Affairs Minister S. Jaishankar. He says, and I quote him, that how do you reconcile this new shift in the power games, or how do you reconcile this new vibrancy in foreign diplomacy? For example, वो कहते हैं कि जब टेक्सास में हाउडी मोदी यानी कि प्रेसिडेंट ट्रंप और मोदी रैली हो रही थी, या ममल्लापुरम में या महाबलीपुरम में शी जिनपिंग was meeting Modi at the same point almost onwards, or in Vladivostok when he was meeting President Putin and discussing about India-Russia relations. Or you look at many bilateral groupings like Russia-India-China axis, जहाँ पर रशिया के साथ इंडिया और चाइना में है, या if you look at J axis like Japan, America, India axis, or if you look at two very contradicting, two very polarizing यानी कि ध्रुवीय संगठनों को आप देखें जैसे कि Quad, which has the membership of India along with Japan, Australia and US, and look at the other way through India is participating. For example, in Shanghai Cooperation Organization, where it shakes hands with Central Asian leaderships like Kazakhstan, Kyrgyzstan, Russia and China, not to forget Pakistan. Now, this is a very perplexing, balancing game that India has been playing.
And S. Jaishankar asks this to the larger audience. हम उन्हीं को quote कर रहे हैं. How do you explain this fine balancing of India's foreign diplomacy? इसका आंसर सिर्फ और सिर्फ स्वायत्ता है, यानी कि रणनीतिक स्वायत्ता, जो एक न्यू फाउंड स्वायत्ता थी, और उसके साथ में प्रैग्मेटिज्म, जिसका मतलब है यथार्थवाद. That what is pragmatic for India is what is desired by Indians to do. Now, not to forget, even while taking these risks, the challenges to India's foreign diplomacy remains. हमारे पास इन सब संगठनाओं के साथ भी, इन सब संगठनात्मक और रचनात्मक गठबंधनों के साथ भी काफी challenges हैं. The challenge are in the name of two nations. If I would say China and Pakistan, I'm sure that most of you will agree. This is what is one of the remaining summits to be closed by Prime Minister Modi and S. Jaishankar. And this is what we have to see. हमें यही देखना है कि मोदी जयशंकर डॉक्ट्रिन अब अपने 8वें और 8वें के बाद 9वें वर्ष में किस तरीके से शेप करती है इस चैलेंज को और पार पाती है. Now, this was a 360-degree review of the Modi Jaishankar doctrine. मैं आपसे और भी बात करना चाहता था about the very intricate personal details of the way Modi conducted his foreign policy. For example, very recently, Jairam Ramesh, I would like to close it with a story. So very recently, Jairam Ramesh told that President Obama used to call Dr. Manmohan Singh as Guru. That, oh Guru, how are you? But it is under Modi that you see that he has been very hands-on with his approach as well as personal. You see beer hug diplomacy. But at the same point of time, you may even see our Prime Minister traveling very late in night just to save the hotel bills when he gets in the nick of time and lands in various foreign destinations to conduct his foreign affairs. Now that speaks about the way a leader conducts personally the foreign diplomacy. और शायद ये भी काफी रोचक घटनाएं हैं जो विद्यार्थियों को या स्टूडेंट्स को या in general any person who wants to know about how foreign diplomacy is concerned will be very happy to know about. Now, this was a StudyIQ presentation. I hope you liked it. We will come up with more such presentations. We are also waiting for your responses. In this segment, we have also decided to attach some sources through which we have prepared our program. So I hope the readers as well as specifically people who prepare for examinations, they might get help and will also have much detailed PDFs to study with. My name is Ashish and thank you for watching StudyIQ presentation Policy Watch. StudyIQ IAS अब तैयारी हुई अफोर्डेबल.